Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. We are in that era in which the information travels so fast. We come to know about anything happening at any place on this planet within no time. And we start discussing those things. Because it's not only one thing which comes in a second, there are lot many things which come in a second. So we don't even get time to comprehend that particular thing which would have come a second before because the next one is there. And we start talking to the people on that without really understanding the need, the requirement, the depth of that information. Now, there are certain things which impact us directly. There are certain things which impact us not today, but might impact us tomorrow. And there may be certain things which impact the people around us. And there may be lot many things which impact our children directly and indirectly, today or tomorrow. So when it comes to discussing things, because lot many discussions take place on YouTube, on Instagram, on X, and everywhere. I mean, somebody would say something, and then people would start responding to that, and it will continue till the fight is so violent that they stop talking about it because by the time another issue would have come in their notice. But only surprising for me is that those things which really impact our children, we tend to ignore them. Though we all say that we are focused and we are concerned about our children's future because they are the ones who are the future citizens of this world. But when it comes to things which are happening around and impact our children so badly, we don't really talk about that much. It can be discussed otherwise in groups, and we can do something. We can add value to something which is not being done in a way it should be done. At least when we discuss, we can forward our suggestions to the ones who are responsible for implementing them or taking care or making things better for our children. What is the best thing for our children to happen in today's time? Of course, health is important. The environment around them is very, very important. Very positive environment has got to be there. But at the same time, the very important thing, and every parent in today's time is really concerned. I mean, at least they express it that way. And I come across a number of parents, rather all the parents who are really thinking only of their children and good education for them. And they keep searching for good schools around here and there. Whenever I try to find out from them, for you, what is a good school? And the one answer which I get from every parent is that the school which has good teachers, quality teachers. I mean, they don't talk much. Not many parents talk about AC schools and all that. Of course, there are people who talk about that also. But the common thing which everybody wants and look for in a school is quality teachers. Now, you see, there was a time when we used to have only the government schools in our country. Mostly these were the government schools. But over a period of time, things have changed, and now we have plenty of private schools also and doing well, contributing for the betterment of our children. You go to the villages in our country, you'll find even there the parents would want their children to go to private schools than to the government schools. I tell you, there are teachers in government schools in those places. I mean, I come from a village and I know that school, the teachers doing exceedingly well, but still the parents are so much fond of sending their children to private schools than sending it to the government schools. I do not know why. How did this change happen and what went wrong? How could we not really keep that status of government schools that high that nobody felt bad of sending their children to a government school? It's not that parents do not believe in the quality of education in government school, but unfortunately somehow the mindset has become like this. That no, if you don't send your child to a private school, the child wouldn't be getting quality education. It is not true. It's not true. I can say it very confidently. So when I was talking to you about that, we don't really talk much, discuss much, and raise our voice for something which would definitely impact our children directly, and that is of having as many schools as possible quality teachers. They must have, I mean, almost all schools must have quality teachers. I had spoken to you in the previous video also that why should there be only few institutions which are called as quality institutions? Why not as many as possible? It may not be the same scale for everyone, but they should be at least having some minimum, quality, each one of them.
all schools across. So I'm really confining myself only to schools. And when I was talking to you that in spite of really getting involved in those discussions which are useless, not leading us to any fruitful outcome, we should focus on such news which I'm going to discuss with you. It is like very recently I came across a news in which it was mentioned that in a particular subject, the particular institution had conducted test and there were 225 posts. They could find only 6 candidates who could qualify to become the lecturer in government schools. And it's not that there were no qualified teachers. There were more than 40,000 candidates who had appeared in the test. But can you believe only 50 out of those more than 40,000 candidates could qualify, could get minimum percentage of marks, which was set at 40%. So anybody who would have got less than 40% would not be considered for the merit. But only 50 out of more than 40,000 candidates, I mean, they would have been postgraduate and B.Ed or whatever qualification they would have had. And out of those 50, only after verification of documents, etc., only 6 were found suitable to be appointed. 6 out of 225 seats, and the headline was that 219 seats not filled at all, vacant. And this was not the only, of course, this number, the gap was too much. That's why the mention of this particular subject was there. But in other subjects also, the situation is almost the same. When I tried to look at the figure, there were many subjects where they could not find, enough number of candidates as the vacancies were. In this country, we keep saying that there is a lot of unemployment. And there's a case which I'm discussing with you where we don't find enough candidates, qualified candidates for that particular post. And I always say that in every field we require competent people. But we require it 100% in case of teachers. When teachers have got to be as competent as possible because they directly impact our children and our future later on. As I said, we all keep saying that हमारे लिए तो हमारे बच्चे ही सब कुछ है, and we'll do everything, and that is the reason people keep running from one place to another place seeking admission in so-called best of the schools. As I said before, जब बेस्ट की बात आती है तो everybody says कि जहाँ पे टीचर्स अच्छे हो, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40,000 में से 50 लोग वो मिनिमम मार्क्स जो है वो नहीं ला पाते, जबकि स्कूलों में आपने देखा है 33% बच्चे लाके पास होते हैं और सभी बच्चे ऑलमोस्ट 90% बच्चे पास होते हैं. आप अगर फिगर देखोगे स्कूलों की तो कम से कम 80% से ज़्यादा बच्चे हर स्कूल के, मैं क्रॉस ले रहा हूं, जो 40% से ज़्यादा नंबर लाते होंगे. सो 80% बच्चे 40% से ज़्यादा नंबर लाते हैं और यहाँ 40,000 से ज़्यादा बच्चों से 50 नहीं ला पाते. तो कहाँ गड़बड़ है? हमारे पढ़ाने में गड़बड़ है, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में गड़बड़ है, हमारे इवेल्युएशन में गड़बड़ है. क्योंकि यूं तो देखते हैं हम अखबारों में इतने ऐड आते हैं, अभी रिसेंटली रिजल्ट निकला है स्टेट बोर्ड का, तो इतने बच्चे 99% से ऊपर नंबर लाए, इतने बच्चे 90% से लाए, इतने बच्चे 80% से ऊपर लाए. अगर ये लाए थे तो व्हाई कुडंट एनी वन ऑफ देम, बिकॉज इन्हीं में से तो कुछ बच्चे अपीयर हुए होंगे लेक्चरर बनने के लिए. मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, हमें इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, हमें यहां पर ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे बच्चों को नुकसान कर रहा है. आज आपको लगता है कि रोटी मिल जाए काम चलेगा, रोटी मिलना भी जरूरी है. विदाउट फूड, आई मीन हेल्थ एंड फूड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इज एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली इन स्कूल्स. आपके सामने कुछ थोड़े डेटा मैंने इस बीच में यूडाइस से लेने की कोशिश की, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूं, और आप भी यूडाइस पे जाकर के ये चीजें देख सकते हैं. सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि हमारे पास पूरा डेटा अवेलेबल है. हमारे कितने स्कूल हैं पूरे भारत में, कितने बच्चे हमारे पूरे भारत में पढ़ते हैं, कितने टीचर्स वहां पर पढ़ाते हैं. अक्रॉस इंडिया अगर मैं आपसे बात करूं तो करीब 15 लाख स्कूल हैं, 15 lakhs schools, and around 24 crore children studying in those schools, and approximately 1 crore teachers are engaged in making our children learn things. ये मैं अक्रॉस इंडिया बात कर रहा हूँ. और गवर्नमेंट स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में मैं बांटूं तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स करीब 10 लाख होते हैं out of these 15 lakhs, and 3.4 lakhs इनमें प्राइवेट स्कूल्स होते हैं. तो जब बच्चों की बात आती है तो करीब 12 करोड़ बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और करीब 9.6 करोड़ बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं.
जो टीचर्स की संख्या है वो 51 लैक्स के आसपास हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स हैं, और 39.6 के आसपास ये फिगर आप देखेंगे कि मैं स्क्रीन पे भी आपको वीडियो में भी डाल रहा हूँ, 39.6 लैक्स के आसपास हमारे प्राइवेट में टीचर्स हैं। ये तो मैंने आपको ऑल इंडिया लेवल पे बताया। अब मैं अगर एक स्टेट की बात करूं, जिस स्टेट में मैं रहता हूं, राजस्थान, तो ये फिगर जो मेरे सामने आया है उसमें ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स अक्रॉस राजस्थान इज 1.06 लैक्स total schools. Out of that, 70,000 are the government schools and 33.5 are the private schools. ये तो नंबर ऑफ स्कूल्स की बात है। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो टोटल नंबर कम्स आउट टू बी अराउंड 1.63 करोड़। इट इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ स्कूल। और मैं जो आगे फिगर आपको बता रहा हूँ सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो करीब 78 लैक्स हैं, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो लिटिल मोर देन 84 लैक्स। तो मैं यहाँ पे अटक गया कि जो बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल इज मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन अगर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्कूल्स इन प्राइवेट सेक्टर इज मच लोअर देन द नंबर ऑफ स्कूल्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये ऐसा क्यों है, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये हो सकता है, क्योंकि अगर मैं क्वालिटी ऑफ, जो मैं कह रहा था कि पेरेंट्स को भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमें अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने से कोई शर्माने की जरूरत नहीं होनी है। क्योंकि वहां पर आप देखेंगे जो रेशो आती है टीचर और स्टूडेंट की, वो 17 की आती है, 1 टीचर फॉर 17 स्टूडेंट्स, जबकि प्राइवेट स्कूल में यही फिगर करीब 24-25 चला जाता है। So means, I mean, the teachers available in government schools are not less; they are enough in number. So only thing is that maybe their distribution, their place of working, it may be having some issues which perhaps the government would be knowing better than what I would be able to discuss with all of you today. So in government or in private, I mean, as I always said, that there should be no sort of fight between the two. They both are trying to provide education. So the government should empower both government schools as well as the private schools to have quality teaching there in the school campus. They must ensure that whether it is a private school or the government school, there are enough qualified teachers available to them. There are enough competent teachers available to them. एंड हमें सिर्फ एक नाम के पीछे भागने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि सच में कौन स्कूल ऐसा है जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, कौन स्कूल ऐसा है जो टीचर्स को सच में उतना वैल्यू करता है जितना कि करना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू देयर वेलफेयर एंड वेलबीइंग, आई मीन दे आर टू बी लुक्ड आफ्टर सो वेल। अगर आज हमारा टीचर खुश होगा, संतुष्ट होगा, उसको तो वो खुशी बांटेगा आगे, संतुष्टि बांटेगा आगे। और अगर टीचर खुद स्ट्रेस होगा या खुद को उसको तकलीफ होगी तो वो आगे कैसे करेगा। तो ये जो मैं आप लोगों से आज ये फिगर शेयर किया है, या उससे पहले मैंने जो कंसर्न शेयर किया था, रीजन उसके पीछे सिर्फ ये कि इसमें कई बार कहते हैं कि साहब प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है, लेकिन हम लोगों को इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज वन पर्सन, वन मैन, वन सोसाइटी और वन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर सच ए बिग कंट्री। हमारे देश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्कूल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा। तो इतने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन जब हम सबको खाना प्रोवाइड कर सकते हैं, हम सब ये कह सकते हैं हम सबको हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो क्वालिटी एजुकेशन ही अल्टीमेटली हमें बेटर हेल्थ और बेटर फूड के लिए आके लेके जाएगी। तो हम लोगों को ये बात करनी चाहिए। मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी ऑन डिस्कसिंग दोज इश्यूज विच डू नॉट टेक अस टू एनी कॉन्क्रीट और समथिंग पॉजिटिव। Discuss about the issues which are helping or not helping our children becoming better citizens of this country. तो इसमें सरकार को भी इस डेटा, इतना मैंने जैसे कहा आपको कि डेटा इतना अच्छा सरकार ने हमें दिया है, उसके ऊपर लेकिन काम करो। दैट डेटा इज यूजलेस until unless we take full use of that data. वो तब हो पाएगा जब हम अपने स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी एजुकेशन देंगे, तो हमारे पास इतने क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल होंगे कि अगर 40,000 बैठेंगे तो मेरे ख्याल से कम 35,000, 38,000, 30,000 तो क्वालिफाई कर जाएंगे। वो मिनिमम जो 40% की बात चल रही है उतना ले आएंगे। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उसको 40% से 20% पे ले जाओ। दैट वुड नॉट हेल्प। प्लीज डू नॉट डू दैट।
I know somebody would come and say it is better to have a teacher who may not be qualified, but not to have a teacher. Please do not compromise on quality. अब जब तक वो प्रॉब्लम हमारे सामने है, उस प्रॉब्लम को आप ना टैकल करो, हेड ऑन टैकल करो, सॉल्व करो, और ये ना कि उसको दरी के नीचे, कपड़े के नीचे दबा के हमें छोड़ दें। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात तो मैंने की, हमें सोसाइटी के रूप में भी जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि भाई हमारे सब बच्चे हमारे हैं, हमारे सब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे को सिर्फ मिल जाए, अब उससे काम नहीं चलेगा। प्लीज इस बात को थोड़ा छोड़िए, सिर्फ मेरे से हट करके हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। वैसा हम लोग जब एज सोसाइटी सोचना शुरू कर देंगे तो परहैप्स हम इन बातों पर चर्चा करेंगे, हम इन बातों के बारे में लिखेंगे, हम अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, और सरकार भी हमारी बात सुनेगी। आज तो हम भी तो सरकार से नहीं कहते, हम भी कहाँ कहते हैं, हम भी कहाँ बात करते हैं, हम भी कहाँ कहते हैं कि भाई आप अपनी क्वालिटी अच्छे टीचर्स। ये कभी कभार एक आध बैगेज सुनने को मिल जाता है दैट देयर वाज ए पर्टिकुलर टीचर हु हैड डन एक्सीडिंगली वेल इन दैट पर्टिकुलर स्कूल एंड नाउ द टीचर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सम अदर स्कूल, द चिल्ड्रन आर सिटिंग आउटसाइड, दे आर नॉट लेटिंग द टीचर डू। बट हाउ मेनी, कितने हैं ऐसे? हम ये क्यों नहीं, हम उसको वहां क्यों रोकना चाहते हैं? भाई वो भी जब वो कहीं पे भी ट्रांसफर होकर जाएंगे तो वहां के बच्चों को अच्छा कराएंगे। तो हमारे पास इतने सारे टीचर ये प्लेंटी में क्यों नहीं होने चाहिए कि कोई कहीं भी जाकर पढ़ाए तो दूसरा भी जो आएगा वो उतना ही कॉम्पिटेंट आएगा जितना कि पहले वाला था। ये हम लोगों को एज सोसाइटी भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, और अपनी सरकारों को बाध्य करना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो टीचिंग को भी उतने ही इंपॉर्टेंस देवें, एजुकेशन को भी उतना इंपॉर्टेंस देवें। सिर्फ और सिर्फ अखबारों में खबरें छपने से, एआई चला दिया, कहीं पे कंप्यूटर लगा दिया, कहीं पे, इससे तो बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। हाँ, मैंने जैसे कहा आपको सपोर्टिव चीज़ें हो सकती हैं, बट जो मेजर है वो ये है कि हम अपने स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन दें जिससे कि आने वाले समय में हमें क्वालिटी टीचर्स मिले। मैं समझता हूं कि आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे और डिस्कस करेंगे। आप बाकी चीज़ों को छोड़ो, पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू करिए, क्योंकि पढ़ाई होगी, अच्छी पढ़ाई होगी तो ही तो दुनिया अच्छी बनेगी, और नहीं तो दुनिया अच्छी नहीं बनेगी, तकलीफें आएंगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल।